ख़वातीन की ज़िंदगियों में to encourage little girls. What's the role of men? I would say that where I am today is definitely because of my husband then. When you had a successful modeling career, acting भी थी, तो क्या सूझी कि ये भी शुरू कर दूं? हम लोग डिपेंडेंट हैं किसी और पे हमें काम देने के लिए, right? I did not like that feeling. मतलब you're not stopping, तो हल्की नहीं आ रही नादिया, you know? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. नादिया, अब मैं आई हूँ तो रैपिड फायर के बगैर तो जाऊंगी नहीं. Okay. So are you ready? Yeah, sure. बच्चों में कौन है who is the troublemaker, who always gets into trouble? It's my youngest one, Sherdad, yes. वो एक चीज which you dislike being a mom. At times I don't like the school pickup routine. बाप ने भी इजाजत दे दी है तो फिर भी कॉल आती है. But Baba has said I can do this. Can I do it? You know, Amma is the final authority. Yeah. अस्सलाम वालेकुम. Hope you all are well. आप लोग सोच तो रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ? Well, I'm definitely not in MomKast studio, बल्कि मैं ख़वातीन की favorite जगह पे हूँ, that's a salon. But किसका salon? She is a woman of strength and I think she has done it all. In fact, she's 10 women in one body. She's a mom, she's a dentist, she's a beautician, she's an actor, she's a model, and the list goes on. In fact, she's an epitome of elegance, grace, class and responsibility. आज हमारे साथ मॉमकास्ट पे मौजूद हैं the one and only Nadia Hussain. Assalamu alaikum Nadia. How are you? Alhamdulillah. Thank you for the wonderful introduction. नहीं, thank you for having us here. Nadia, I'll start with your childhood. पहले ये बताएं कि बचपन कैसा था, घर का माहौल कैसा था? How many siblings do you have? So I have one younger sibling and ghar ka mahal was very, I would say, not very strict, but yes, it was strict because हम लोगों को कुछ ऐसी चीजें होती थी कि जिसके ऊपर बड़ा compromise नहीं होता था. But yet at the same time actually myself and my brother used to fight a lot जिसकी वजह से हम लोग को बड़ी मारे भी पड़ी हैं क्योंकि almost like physical fighting ऐसी होती थी इस level की होती थी just like regular normal siblings. Yeah, तो उस चीज पे मार भी बड़ी पड़ी है but we were always encouraged to explore, to try out new things, and also that, like we were encouraged to do a lot that was not really something that everybody would do. Like for example, my Nana used to say कि तुम जो है ना वो उस जमाने में जो वो टेलीफोन वाले जो वो like वो कॉर्ड वाले टेलीफोन्स होते थे तो उसकी तारें है ना पाँव में फंस के इधर उधर तो he used to say कि नहीं तुम जो है ना वो तारों को जोड़ो. So there were lots of things that like we were encouraged to do and which I think was something that that gave me at least a lot of confidence to like to explore and to do many things. I was just thinking the same thing कि आदमियों का role, like you said कि your nana helped you and encouraged you. इसी तरह I think at that time coming into a field and being independent at that time, I think आपका क्या ख्याल है कि ख़वातीन की ज़िंदगियों में to encourage little girls, what's the role of men, both in terms of as brothers, as grandfathers, as husbands या as fathers, आपके ख्याल से क्या role होना चाहिए आदमियों का? बहुत मेजर किरदार है of the men in our society for anybody who is for any working woman. अभी यहाँ पे मेरे पास एक मॉडल आई भी है and she has also mentioned the exact same thing. Unfortunately, her situation is such that her I mean, ये एक reality है, which is a very sad reality, but it is a reality that for some reason, her in-laws did not accept her daughter and she was forced to leave the house, but her husband supported her. And today she is here at the salon, mashallah, she has the aspiration to go ahead, to move forward, and that's only because of her husband. And यही जो चीज़ है, ये हम हर कैटेगरी और हर तबके में देखते हैं कि जिस तबके में उल्टा भी होता है बल्कि अगर आदमी जो है वो आपका सपोर्टिव नहीं
नहीं है और किसी किस्म से जो है बिल्कुल वो आपको सपोर्ट नहीं करता है, उस सूरत में भी औरत को घर से निकलना होता है। बिल्कुल और जहां पे सपोर्टिव होते हैं तो फिर उस सूरत में औरतें जो हैं वो और ज्यादा फ्लरिश करती हैं। एग्जैक्टली एंड आई थिंक हम माने या ना माने मेन डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि खवातीन जब तक एक जैसे ग्रूमिंग होती है ना, जो आदमी एक अपनी वाइफ की या अपनी बहन की, बिकॉज दे हैव बीन आउट, वो बाहर होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो आई थिंक अगर एक आदमी अपनी एक औरत को, बी इट अ सिस्टर, बी इट अ वुमन, यू नो एनी वुमन, आई थिंक जो आदमी एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उससे जो कॉन्फिडेंस औरत को मिलता है, आई थिंक नथिंग कंपेयर्स टू दैट. बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन दिस इज समथिंग दैट गोज विदाउट सेइंग। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, माय initial step into the career of modeling was, my mother was not very supportive of it. She's like, because I was about to start my dental career, and my mother was not supportive at all, and she's like, नहीं नहीं नहीं, ये पता नहीं तुम किस क्या काम करना चाह रही हो, and things like As that. compared But to dentistry, exactly. yeah, but Typical. it was my father actually who said, "Ki Nini, let her do it." बिल्कुल. And also because like I was getting good paid, I was getting paid a good amount of money, so he's like, कि हाँ नहीं करने दो उसको, like कि बता अच्छा है कि पैसा एग्जैक्टली कमाए नहीं, और अपने क्या उस लिए। जमाने में हैविंग दैट थॉट कि आपकी बेटी इंडिपेंडेंट हो, आई थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट, एंड आई थिंक द क्रेडिट गोज टू योर फादर कि अगर वो आपको इनकरेज नहीं करते तो प्रोबेबली यू वुड नॉट हैव बीन हियर व्हाट यू आर टुडे, माशाल्लाह, Yes, डूइंग अ definitely. मल्टीटास्कर. But I mean, I would say that where I am today is definitely because of my husband. बिल्कुल. Yeah. कमिंग टू योर हस्बैंड, आई वाज कमिंग टू दैट कि माशाल्लाह यू हैव 4 किड्स, ब्यूटीफुल 4 किड्स. तो उसमें हाउ डू यू मैनेज इट? डू यू हैव द सपोर्ट ऑफ योर हस्बैंड? डेफिनेटली, बिकॉज बीइंग अ मल्टीटास्कर, इतने businesses you're running, mashallah. So how does your husband and you, how do you work it out? Oh, definitely the support is there from my husband. When I'm not there at the house, then he's very much around, overseeing whatever it is that needs to be done for the kids. चाहे homework है, चाहे वो खाने का है, चाहे वो उनका bed time है, या whatever else it is, like it's my husband who's overseeing everything and ensuring कि बच्चों की जो routine है वो disturb ना हो. And Nadia, मुझे ये बताएं कि आपके husband, like was he that when he got married, या थोड़ी सी ट्रेनिंग आपने दी उन्हें? बिकॉज खवातीन का यही रोना होता है ना कि आदमियों को करना ही नहीं आता, दे डोंट नो कि बच्चों के साथ करना क्या है. सो वाज इट यू हु ट्रेन्ड हिम? वाज इट अ कोलैबोरेटिव एफर्ट? एक जैसे होता है ना, विलिंगनेस तो डेफिनेटली आपके हस्बैंड की होगी, बट हर कोई वो कर नहीं पाता ना, लाइक. Yeah. So actually, my husband has been very fond of children, which I would say is very, very. I mean, like it's a blessing for me that he is fond of children, and he's a very homebody. So he doesn't want to get out of the house. Once he's in the house, he just doesn't want to get out. He doesn't even want to go to the gym. कि जी मैं बाहर जिम में कहीं मेंबरशिप लेके करूं, तो उसने कहा मैं जिम भी घर में बना लूंगा. तो उसने जिम भी घर में बना ली. It's like कि मैं अब like once I'm home, I बिल्कुल. want to be home. एंड दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि यूजुअली फादर्स ये होता है कि घर आके वो टीवी में अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं, एंड इवन इफ देयर होम, वो बच्चों के साथ उस तरह टाइम नहीं स्पेंड कर रहे होते. तो आई थिंक Yes. हमारे आपके हस्बैंड से भी मिलना पड़ेगा. आई थिंक ही इज एन इंस्पिरेशन एज वेल, सो दैट वी कैन Yes. मोटिवेट अदर मेन एज वेल कि बिल्कुल. बच्चों के साथ किस तरह रहना है. बिल्कुल. Coming to your role as a bahu, how has been your relationship with your saas? She lives with you, you're Yes, you're yes, living it yes. together. That Yeah. itself is an inspiration for the women out there, and I would like कि ख़वातीन ये देखें कि Nadia being a multitasker, she's doing and running so many businesses, and at the same time आप अपनी सास के साथ भी रह रही हैं, वरना people encourage nuclear families कि हम अलग बिल्कुल हों. So how is your Actually, for approach? me, it is a huge support, because if my husband is not home, Zahir hai, बिल्कुल. during the daytime he's not home. He comes home by about 5-6 in the evening, and if I am not home in the afternoons, सुबह में तो चलो बच्चे घर में होते हैं, दोपहर तक घर में होते हैं, but during that interim period, till the time my husband comes home, we only rely on my mother-in-law. And before that as well, when my father-in-law was alive, he would be very willing and very happy to drop the kids in the morning, to pick them up in the afternoon, to take them to swimming or anything of that sort. कोई भी activity है वो कहते थे कि हाँ ठीक है मैं भी ले जाऊंगा or something. And so I would say very hands on, again very hands on and very willing. ये नहीं होता था
था कि उनको willingness नहीं थी, because actually my husband is the only child that lives with them in Pakistan. The other two children don't live in Pakistan. तो उनको जो है ना वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन वाली एक जो मोहब्बत है वो बहुत ज्यादा कूट कूट के वो निकलती है मोहब्बत. And I think being as grandparents, I think they're setting a role model for your husband as well. I think आपके husband भी इसलिए he's a homebody because उन्होंने वो अपने खुद parents को देखा कि how involved they were with children. Yes. So I think it channels down in the family कि वो एक जिसे कहते हैं ना एक trigger ripple effect होता है कि जब आपने वो चीज देखी हो अपने वालिदैन को करते में तो automatically. And he himself is a very very dedicated child for his own parents. You know, like even at the time that his father was alive, when anything that needed to be done for him, he would be the one who would say कि नहीं मतलब बढ़ चढ़ के उसको करना होता था, because he was the only one here. And even for my mother-in-law right now, she's 83 mashallah, and whatever it is that needs to be done, he doesn't even go to sleep at night till, you know, he has rubbed the balm on her knees and all that, you know. He's like it, and he'll sleep on the couch. And you know, I mean, देर तक जो है वो अगर मेरी सास टीवी देख के उठती हैं तो he'll be like, and he'll be sleeping on the couch, and I'm like, you know, you can rub the balm a little earlier and go to sleep properly in bed. And he's like, no, I'm fine. लेकिन इसमें मैं नादिया आपको भी अप्रिशिएट करूंगी बिकॉज यूजली खवातीन ये चीज़ माइंड करती हैं इफ उनके हस्बैंड्स अगर टू मच टाइम अपनी अम्माओं के पास स्पेंड कर रहे होते हैं तो यूजली खवातीन इस पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं. तो लाइक हाउ डू यू बैलेंस योर रोल एज अ वाइफ, एज अ बहू, एज अ मदर? तो ये आपको भी आई थिंक क्रेडिट जाता है दैट यू हैड दैट रिलेशनशिप एंड दैट पेशेंस कि यू नो यू आर अलाउइंग योर हस्बैंड टू स्पेंड दैट टाइम विद देयर पेरेंट्स. Well, I mean, like, I don't mind him doing whatever it is that he's doing for his parents, as long as whatever it is that he needs to do with me, and whatever time and whatever that we need to do together, that also he is balancing out. So that is very important. So I think that's where the men's role comes in, that wherever it is needed, you know, like he does Actually divide the time. exactly. And also that when I'm not home, then I don't feel guilty. Exactly. You know? अभी मैं आऊंगी मॉम गिल्ट के ऊपर भी because us being working parents as well, वो सबसे पहली चीज एक यही होती है मॉम गिल्ट, but I'll come to that later. Yeah. ये मुझे बताएं नादिया that mashallah you have 4 children, correct me if I'm wrong, it's Shadil, it's Shanze, Sasha and Sherdad. Yes, very so नाम किसने रखे इतने अच्छे? So the first one, Shadal, is my husband's ancestral name. उनकी ancestry में जो है वो कहीं पे ये नाम था Shadal, and there were 2 brothers actually, Shadal Khan and Badal Khan. तो मैंने कहा बादल तो मैं किसी सूरत अपने बच्चे का नाम नहीं रखूंगी. तो उसने कहा ठीक है, Shadal जो है वो नाम was decided from before. He had said कि भी मतलब ये तो ऐसी चीज थी जो उसने शादी से पहले ही कहा था कि भी अगर मेरा बेटा होगा तो मेरा बेटे का नाम ये होगा. And I'd be like, acha, okay, you know. But so Shadal was decided. If it was going to be a boy, it would be Shadal. Well, coincidentally, the first one happened to be a boy, so it was decided from before. The rest of the names I kept. So it just so happened कि जब मेरी second one जब पैदा हुई तो उस वक्त जो नाम मुझे suitable लग रहे थे उनमें से बहुत ऐसे नाम थे जो already मेरे दोस्तों ने अपने बच्चों के रख लिए, you know, आस पास में neighbors ये वो blah blah cousins में सबके जो नाम जो मैंने सोचे हुए थे वो सब नाम इधर उधर ले लिए गए थे. तो मैंने कहा यार ये तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो गई, जो मुझे अच्छे लग रहे हैं नाम. So then I decided that, you know, fine, let me just name her Shanze, and I was like, you know, कि शादल शानजे अच्छा रहेगा. तो जब तीसरी की बारी आई तो दोनों बड़े बच्चों ने कहा कि उसका भी नाम श से होगा. तो जाहिर है चौथा भी श से होना था, तो वो सब श हो गए. That's great. अच्छा नादिया मुझे ये बताएं कि being a mother and a working mother, how do you train your children? Because मैंने जितनी दफ़ा भी आपके बच्चों को public platforms पे, public places में देखा है, चाहे वो food festival हो, कुछ भी हो, they are well behaved children. So ये बताएं कि हम लोग घर में होते हुए भी training नहीं कर पा रहे होते. And just right now I was listening, you had a call from your little one, I think, call आई थी, and you were so patient. तो ये कैसे? How?
Yeah, because I know that, you know, if I am not there, then whatever it is that he or my children want or they want to discuss with me, I have to discuss that with them. I have to give them that comfort that, you know, if I'm not there, then they can still call me. And I mean, mostly मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी मेरे बच्चे कॉल करें, I do receive their call, so that they know that I'm accessible all the time, and you know, they know that I am there for them. They know that it's not as though कि अगर मैं गई नहीं हूँ तो मैं बिल्कुल out of sight, out of mind ही हो जाऊँ. You know, like for them, it is important for them to communicate with me, and that remains. You know, like my daughter, my older one, she had fever the other day. तो उसने मुझे कॉल किया, even though my husband was home, my mother-in-law was home. Mama, I have fever, my stomach is hurting, and I'm like, Shanze, you're 16 years old. But I जो mean, एक you अम्मा के know. साथ जो एक relationship होता है, that's हाँ, so बिल्कुल. I was like, Baba is home, दादू is home, मतलब उनको बोलो भाई, तुम खुद दवाई खा लो, तुम पैनाडोल खा लो, कुछ भी खा लो, तुम क्या इतना मुझे कॉल करके क्यों बता रही हो? You know, she's. So I was like, okay, like, you know, this is a bit strange. नहीं, that's an achievement, because keeping in mind कि आप इतनी चीजें run कर रही हैं and you know running such errands throughout the day, so Yeah. having that relationship with your kids is an achievement for you. And I think दादी के साथ भी बहुत अच्छी relationship है, because मैं आपका एक interview देख रही थी, उसमें they all said बात हो रही थी पॉकेट मनी की कौन देता है, तो they said दादो देती हैं. तो I think they have a हाँ. wonderful relationship with their Yes, दादी. yes, they do definitely. Actually, the thing is कि my husband and my mother-in-law, they both spoil the children a lot. लेकिन जो वो disciplinarian वाली जो चीज़ है, वो फिर मेरी तरफ से आती है, no? तो lots of हाँ, things which they want to do and they बिल्कुल, don't know whether they're allowed to do or not, बिल्कुल, then they have to call me and ask, and they're like, बिल्कुल. Mama, can we do this? Can we हाँ, do that? हाँ, You I know? saw that was a proof of call पे यही था कि what are the days which you are deciding. या सो ये चीज होती है, तो फिर मेरे से ही जो है वो अप्रूवल, अगर बाप ने भी इजाजत दे दी है तो वो फिर भी कॉल आती है, बट बाबा हैज सेड आई कैन डू दिस, कैन आई डू इट, यू नो. Amma is the final authority. या अच्छा Nadia, another thing is that when you're away, obviously पीछे बच्चे हैं, तो how do you manage their activities? Like screen time होता है, क्या होता है? Because हमारा as mothers यही रोना है कि हम घर पे नहीं हैं, तो बच्चे टीवी या gadgets लेके हैं. So what is your strategy to, you know, keep them away from screen? Actually, I don't think that there is too much that I can do to keep them away from the बिल्कुल. screen. I mean, my older kids, they have to study on, जब online था तो वो Exactly, तो वो तो हर too वक्त ही much. online था. बिल्कुल. अभी भी जो है वो कुछ ना कुछ ट्यूशंस या कोई ऐसी चीज है जो online चल रहा होता है. So not just, you know, like idle viewing, you know, ऐसी चीज नहीं है. बहुत दफा Something उनका constructive. homework भी online हो रहा होता है. So there's not too much that I can, you know, do to control that, but I try and make them do other activities which is away from screen time. जैसे कि उनके tutor आते हैं, उनके मौलवी साहब आते हाँ, हैं, फिर you उसमें. know, like उनको फुटबॉल बाहर जाते हैं. So there are activities that I try and engage them in which is away from the screen. और जाहिर है स्कूल टाइम में तो they are वो away from the बिल्कुल. screen, but also that I try and you know monitor कि वो क्या देख रहे हैं और बिल्कुल. content क्या है जो वो देख Exactly. रहे हैं, which I feel then that if the content is fine, then I don't really बिल्कुल. want to, and I am very open in discussing बिल्कुल. about, you know, things, even language for that matter. You know, बिल्कुल. there'll be like a word which is like even I mean ये stupid and idiot जो है वो तो बच्चों की किताबों में Common. भी लिखा जी, हुआ होता है और बिल्कुल. बहुत common word है. But if there is a video in which, you know, I'll hear my son watching a video in which, you know, like there is बिल्कुल. idiot or stupid being said, so I'll immediately look at him and he'll be like, no, I wasn't watching it, and he'll immediately, you know, like उसको आगे कर नहीं, so देगा. the credit goes to you that you हाँ. are vigilant. वही बात है ना कि जब तक पेरेंट्स ये चीज बताएंगे नहीं बच्चों को, जो सोसाइटी में आजकल ट्रेंड्स चल रहे हैं, आई थिंक पेरेंट्स आर द ओनली वन कि जिसे कहते हैं ना कम्युनिकेशन भी रखना बच्चों के साथ, लाइक यू सेड यू आर वेरी ओपन टू देम. तो आई थिंक वो कम्युनिकेशन रखना इज द की, सो दैट वो You आपसे see, हर बात शेयर करें. I truly believe that it is just not possible कि हम अपने बच्चों को छुपा दें. इतना seclude करें बिल्कुल. from reality बिल्कुल. कि वो दुनिया में जब जाएं तो वो कहें ये हम कहाँ आ कहाँ आ गए? गए. बिल्कुल, आप कर नहीं सकते ये नहीं कर बिल्कुल. सकते और अगर आपको. करेंगे तो ये आप बच्चे के लिए बुरा कर रहे हैं, उसके लिए, बिकॉज़ इट विल कम एज़ अ शॉक उनके लिए ना. या बिल्कुल. Coming back to your first child,
how was it like? What were the mistakes? वो कौन सी गलतियां थी जो आपने शादिल के साथ की, जो ग्रेजुअली आपने फिर शेरदाद के साथ यू अमेंडेड एंड करेक्टेड कि अब ये तो नहीं करूंगी फोर्थ वाले के साथ? So I had a very tough time feeding him, which was something that I had realized in during that time only because he was exclusively breastfed, and वो जो And you were working at that and time. I was part-time working. मतलब उस वक्त में जो था I was working, but I was in and out, and I used to be like pumping all the time and all of that. लेकिन जो पंप करने के बाद बॉटल उसने कभी भी नहीं ली, क्योंकि मैंने बॉटल जो चीज वाली थी वो बहुत देर से शुरू की, लाइक 3-4 महीने तक शुरू की. तो वो तो they don't take that. They don't take, and I was like, oh my God, that was a huge problem for me. And even feeding them was a feeding him was a big problem because he was so attached to me कि और वो हम लोग बस एज अ पेरेंट आई थिंक फर्स्ट बॉर्न में हम होते भी थोड़े ओवर हो जाते हैं हम लोग ना, कि हर चीज परफेक्ट हो. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो उस चीज में जो था वो बड़ा वो चीज मुझे बहुत ज्यादा फील हुई कि ये तो गलत हो गया है. दिस इज नॉट समथिंग विच आई शुड डू, बिकॉज देन इन द सेकेंड वन देन एट लीस्ट आई मेड माई डॉटर नॉट इन द बिगिनिंग. They were never really formula fed in the beginning. I would always pump the milk and I would freeze it and all of that, but I would give them from the bottle. तो वो जो थी फिर वो चुस्नी वाली आदत भी फिर मैंने उसकी डाली कि भाई अगर मैं नहीं हूँ, या बॉटल भी हर वक्त तो बॉटल तो नहीं आप लिख, तो वो चुस्नी वाली आदत भी मैंने डाली. Which is something that I felt was a big relief for me. And I had no guilt कि जी मैं जो हूँ वो बॉटल से उनको breast milk दे रही हूँ, because it was like but it was breast milk. मैं तो यही कह रही हूँ कि आपने सारे मुश्किल काम किए हैं. लाइक पेरेंटिंग में हम तो सबसे इजी ये होता है कि फॉर्मूला लगाओ, अच्छा है, लंबा सो जाएगा, पेट भरा रहेगा. सो यू चोज फॉर द डिफिकल्ट पाथ कि ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट इजी. इवन पंपिंग अगर हम देखें तो इट्स नॉट इजी कि आप मुस्तकिल, वो भी एक जॉब है. It is a job, definitely. And there were times I used to be traveling with my children, not really with, but अगर मुझे 1-2 दिन के लिए जाना होता था तो मैं पहले से ही प्लानिंग करके मैं like वो पूरा रात में दिन में इस तरीके से मैं होता था कि अच्छा हाँ यार अब मुझे करना ताकि स्टॉक जो है वो रखा रहे. और एक दफा मुझे याद है कि मैं फंस गई थी इन इस्लामाबाद बिकॉज आई हैड माय फ्लाइट गॉट कैंसल्ड, एंड that was one of the toughest nights I remember because I was like I was so full. I was like oh my, and it was so painful. मुझे तो वो दर्द जो है ना वो मुझे भूल नहीं सकता जिंदगी भर, because I was in tears. I was like I don't know what to do because I had decided to leave my child. And then it wasn't necessary to leave my child, and I was thinking यार काश वो बच्चा मेरे साथ होता, because it was not necessary for me to leave him. मैंने कहा मैं एक दिन के लिए जा रही हूँ, छोड़ो, let him be. But oh my God, it was terrible. That was a learning experience for you. Very, yeah. But then खैर anyway, I think after that I used to. लेकिन वो ये है ना कि वो ममता जो है वो I think being a celebrity भी मैं ये चीज देख रही हूँ कि हम लोग भी idealize you people so much कि like perfect है life आप लोगों की, there are no struggles and कोई मसले ही नहीं है. But now that I'm talking to you, I think वही सारे मसले हैं which तमाम ख़वातीन इन्हीं मसाइल से गुजर रही होती हैं. And it's just about finding your own strength कि आप अपने अंदर जिसे कहते हैं ना एक जो आपकी strength है आप उसको you find it out. बिल्कुल बिल्कुल. नादिया, कभी ऐसा हुआ कि being a parent आपने सोचा हो कि बस the toughest part of being a mom कि बस अब नहीं हो रहा, बस हो गई अब मेरी I don't think that point. sometimes overwhelming हो जाती हैं चीजें, जॉब, बच्चे, घर, playing all the roles. एक breaking point sometime आता है ना कि इंसान कहता है कि बस अब थक गई मैं. Like I'm saying that I don't think that point can ever come as far as a mother is concerned, that can never happen. But yes, there are times when like there are business related issues. Mostly nowadays it is business related issues. उस पे जो है वो मैं कहती हूँ बस हो गई यार, बस हो गई, मैं नहीं अब और संभाल सकती, कभी ये इशू तो कभी वो इशू. एंड इट्स इन पाकिस्तान I'd say it's never ending, कोई भी ऐसा वक्त नहीं है कि जहाँ पे आप कहो कि यार बिजनेस बड़ा स्मूथ सेलिंग है. कोई ना कोई पीछे से कोई टैक्सेशन का इशू आ जाएगा, कोई रिश्वत का इशू आ जाएगा, कोई इसका इशू आ जाएगा, कहीं पे कोई मतलब कहीं पे कोई
कोई ना कोई मसाइल आते ही रहते हैं, which then you're just like economic situation आ जाती है, कोविड आ जाता है, इतना बिल्कुल, कुछ हो जाता है इट्स that you're like, कॉन्स्टेंटली oh देयर। my और फिर लोगों God, की भी रिलायबिलिटी ना, बिकॉज़ आप जिस उसमें डील कर फील्ड रही हैं में, लोगों में, yes, हैविंग द राइट काइंड ऑफ पीपल विद यू, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आई थिंक, बहुत कि बहुत सही बहुत, लोगों की पहचान होना, दैट यू हैव द राइट पीपल विद यू। yes, 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 yes. Nadia, coming to your professional, business, Nadia Hussain ka, what was the thought behind it, especially when you had a successful modeling career, acting भी थी, तो क्या सूझी कि ये भी शुरू कर दूं? So I had been modeling since like it had been almost 18, 19 years that I had been modeling when I had decided. Well, at that time it had been around 15 years because मेरे salon को जो है वो अब 8 साल हो गए हैं. So उस वक्त जो है वो 15 साल तक हो चुके हुए थे that I had been modeling, and I was like, you know, I can't possibly do this for the rest of my life, of course. बिल्कुल। So the decision was that, you know, what is it that I can kind of progress to? So then the idea was, because since I am a qualified dentist, my plan was कि मैं dentistry एक clinic खोलूंगी बिल्कुल। जिसके अंदर dentistry भी करूंगी, और फिर मैंने सोचा था कि मैं aesthetics करूंगी. तो aesthetics के मैंने courses किए, मैंने एक सोल एस्थेटिक्स का क्लिनिक भी खोला था, बट एट दैट टाइम माय डॉटर वाज न्यूली बोर्न, द थर्ड वन. उस वक्त मुझसे वो मैनेज नहीं हो सका क्लिनिक, बिकॉज यू नो आई हैड टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ. आई डिडंट रियली हैव अ टीम. आई वाज बेसिकली ओके। जस्ट रनिंग द क्लिनिक ऑन माई ओन. तो वो बड़ा फिर मेरे लिए मुश्किल हो गया था, बिकॉज हर चीज खुद संभालना, मार्केटिंग भी, स्टॉक भी, पेमेंट्स भी, ये वो ब्ला ब्ला, बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए. तो फिर मैंने सोचा कि आई डोंट थिंक दिस इज द राइट टाइम. तो वो मैंने अपना क्लिनिक बंद किया. बट देन बाय द टाइम दैट आई हैड द फोर्थ वन, एट दैट टाइम आई वाज, यू नो, लाइक थिंकिंग कि अब मैं क्लिनिक अगर करूंगी तो then, you know, like the idea was then maybe I should do the salon and clinic together, बिल्कुल। so that then maybe you know, that's something that and the it wasn't really a plan from before, but the place that I got, which was, you know, like my Clifton location was my first branch. तो वो जो location मुझे मिली वो इतनी prime location थी कि उस वक्त में उस location को I didn't want to let go of it. And then I had planned that, you know, like I think that the best solution is कि because वो जगह बहुत बड़ी है, तो मैंने सोचा कि फिर may as well salon भी कर लें और साथ में clinic भी So कर you do लें. have both salon and your dental clinic running side Yes, by and the side. aesthetics as well. एंड मैं ऐसे ये सोच रही हूँ दैट बीइंग अ वुमन, आपके अंदर वो आई थिंक इंटेलेक्ट एंड वो फार साइटेडनेस भी होनी चाहिए एज अ वुमन. लाइक यू डिड नॉट लेट गो ऑफ योर ड्रीम कि चलो अभी इट्स नॉट द राइट टाइम, लेकिन यू हैड दैट कीड़ा इन योर माइंड कि अब आगे जाके यू परस्यूड इट, यू Yes, डिडंट yes, फॉरगेट yes, अबाउट yes. इट. बिल्कुल, दैट बिल्कुल, इज वेरी आई थिंक yes, yes, yes. नेसेसरी फॉर अ वुमन एज वेल. कि बहुत दफा हमारी जिंदगियों में ऐसा होता है कि हम अपने पैशंस को परस्यू नहीं कर पाते, बट the fire should remain, ताकि Yes, yes. whenever it's the right time. Yes, definitely. Because again, it was one of those things that, you know, how long can I be modeling for? बिल्कुल. And then I actually was not happy with the fact that this industry, the media industry, is such that हम लोग dependent है किसी और पे हमें काम देने के लिए, right? I did not like that feeling. I wanted to be in control of my own life and my own destiny and my own future. भले मैं साइड में करती रहूं ये काम, लेकिन मैं solely इस चीज पे डिपेंडेंट हूं. मुझे वो नहीं, मुझे वो फीलिंग नहीं पसंद थी. And I have never been that type of a person either. So yes, during the time that I was very much at the top of my career, of course लोग मेरे पीछे भाग रहे होते थे. लेकिन you know, I mean, it's not possible because in 15 years, of course, there were many more that came. And I was also, I started getting busier with my children, and all of that was happening. So I was like, you know, कि बहुत हो गया यार, 15 साल मैंने किए, उसके बाद भी मैंने 3-4 साल कंटिन्यूअसली मॉडलिंग की. लेकिन फिर मेरी अपॉइंटमेंट्स क्लैश होने लग गई, मेरा you know कुछ ना कुछ क्लैश होने लगा. And then I was like, you know, बस, I'm too old now as well. I just can't do it anymore. You know? Nadia, I would say कि आपका ये वही again far-sightedness है ना, कि you made the right decision at the right time. वरना usually celebrities हमारे ये accept नहीं करते कि अब
हमारा time, letting others, giving the others Yeah. some way. Yeah, yeah, So yeah, you yeah, decided at the right moment कि आपके अब, अब बस हो गई, and now I should give, space to other girls as well. Yes. And then you had that thing, अब मेरा time पूरा हो गया, अब I should do something else. Yes, So yes. ये having that thought itself is a, big thing. And then providing job opportunities to all the women कि आपके salon and dental clinics के through इतने लोग माशाल्लाह they're employed. So I think that's a big role that you're playing as a woman. और ये बहुत बड़ी बात है कि कोई खातून इस level पे business run करी. I think आपने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा इसके बारे में. नहीं, I mean, mashallah, thank God that, I've been able to provide and to, there are those times when I feel, oh my God, जब वही मैं कही ना, business से related जब चीजें ऐसी होती हैं, फिर मुझे at times होता है कि यार बस हो गई है, तो फिर मुझे होता है कि नहीं, और light जलती है. I am the source of जो जरिया income है, I am that, so like I'm just like I don't know what's gonna happen to these girls then. Yes, exactly. और वो चीज सोचना, playing your part as a responsible citizen, कि मैं किसी के काम आ जाऊं. That itself is a very big thing to do. बिल्कुल. एक और वेंचर नादिया हुसैन का ब्लिंग. ये क्या कहानी है? अब इसके बाद फिर एक और. You don't stop, don't you? So, I mean, this salon is a service industry, right? And there was something in my mind that I felt that, there has to be something which is an item that I can, like एक वो जो so-called collectible, it's not a collectible item, लेकिन ये कि एक purchase वाली item की जी ये जो brand है या ये जो चीज है वो मुझे इस again dependency on somebody else ना कि अगर आप salon चला भी रहे हैं तो like buying cosmetics from somebody else एक अपना अगर in house कोई चीज हो जाए तो I think उससे बड़ी और क्या बात होगी. हाँ बिल्कुल, लेकिन खैर it's not as though कि जाहिर है वो मुझे मुफ्त का तो नहीं पड़ता ना, वो जो प्रोडक्ट जो मैंने खरीदा है वो मुझे भी उसकी कॉस्ट पड़ती है. But this was an item that I felt that like there aren't very many makeup brands in Pakistan that are the so-called celebrity brands. Brands तो बहुत होंगे लेकिन celebrity brands नहीं है इतने यहाँ पे. And that is something that I felt that there is a niche, that I can capture, and this is a market that I can capture where internationally तो बहुत सारे celebrities हैं जो कि इसी field की तरफ जो है वो progress करते हैं. They'll launch their cosmetics, they'll launch their clothes, they'll launch some kind of like a luxury brand. So वो जो luxury brand है, अभी तो मैं luxury service में थी, तो I had felt and thought that I should have a brand as well, which then I felt that the best thing that I can do is to have makeup. So that is where I started with, and अब जो है वो fragrance भी आ गई है और आगे जाके जो है वो और भी इसी से related जो है वो चीजें होंगी. मतलब you're not stopping, कोई हल्की नहीं आ रही नादिया, नहीं बिल्कुल भी नहीं. अच्छा नादिया, when you started your business, what were the challenges वो जो आपने फेस किया एज अ वुमन, बिकॉज हमारी सोसाइटी में मर्दों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना कि एक औरत एक बिजनेस रन करे, तो व्हाट वर द चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स जो आपको फेस करने पड़े फ्रॉम द सोसाइटी? No, not from the society, but there were lots of challenges that I had from the authorities. जो authorities हैं उनकी तरफ से जो है वो बहुत ऐसी चीजें भी, because like doing business in Pakistan, it's like everything is, it's not as though कि आपको एक bookish चीज है जो आपको फॉलो करनी है. इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको on the go while you are in it, like you are learning about these things, and like this is not something, and it's really not something that is easy to actually follow and easy to do. चाहे वो registrations हो गई या आपको जो है वो अगर मतलब बहुत ख्वारी है, बहुत ख्वारी है और सेलिब्रिटीज को भी ख्वारी है. यस और सेलिब्रिटीज को और ज्यादा ख्वारी है, बिकॉज अगर आप इस किस्म का बिजनेस खोलते हो तो वो आप ज्यादा आप रेडार में आ जाते हो, तो वो लोग आपके पीछे ज्यादा भागते हैं. मतलब कि ये चीज जो है वो मैंने रियलाइज कर ली है कि हमें जो है वो चाहे वो किसी किस्म की अथॉरिटी हो, वो हमें ज्यादा तंग करते हैं बनिस्बत और लोगों के जो कि
अननोन है लेकिन हमसे बेहतर शायद बिजनेस कर रहे हो, हमसे ज्यादा कमा रहे हो, लेकिन वो लोग उनके पीछे नहीं भागते। यस, वो हमें जो है वो तंग करते हैं, हमें जो है वो कोशिश करते हैं कि दे शुड tap into us, and like, I mean, for example, like, the Sindh Revenue Board, for that matter, I mean, Sindh Revenue Board वालों ने myself, Depilex, Angie, Nabila, couple of the known salons, उन लोगों के पीछे बस पड़ गए कि जी आप लोग जो हैं वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड के साथ जो है वो आप लोग एक अलायंस फॉर्म करें कि आप जो हैं वो अपनी जो आपकी इनकम है वो डायरेक्ट एसआरबी के सिस्टम में जा रहा हो। तो हमने कहा कि हम तो गिने चुने जो हैं वो 10 सैलॉन्स हैं, 10 Because you're one of the best ones, तो इसलिए शायद probably उन्होंने वो आपको highlight किया। Yeah, but we were the known ones ना, but अब पूरे कराची में 4,000 5,000 सैलॉन्स हैं। अगर गली कूचे में भी अगर 3-3 10-10 सैलॉन्स हैं, आप उन सैलॉन्स को जाके कैसे रजिस्टर करेंगे? उन्होंने कहा इसमें तो टाइम लगेगा। हमने कहा हमें क्या काले कुत्ते ने काटा है कि जी हम जो हैं वो आपके उसमें हम लाइक सिस्टम में आ जाएं और फिर आप हमारे ही पीछे पड़े रहेंगे और उनको तो आपने रजिस्टर करना नहीं। Just because you're a big name, ना, that's why कि it's easier कि इनको पकड़ लो। Yeah, so we were like, why? I mean, double standards of our society. There was one labor department, जो labor department मुझे पता ही नहीं था, labor department जो है वो उन्होंने हमें कोई पता नहीं कोई इस किस्म की कोई नोटिफिकेशन मुझे उन्होंने दी भी थी, पता नहीं अगेन रजिस्टर करने के लिए और whatever it was, वो नोटिफिकेशन मेरे ना सैलून पे आ रही थी और ना मेरे अपने घर पे आ रही थी, वो मेरी अम्मी के पोस्ट बॉक्स में जा रही थी, and my mother's post box she never opens because she lives in an apartment, तो उनका अपार्टमेंट का जो मेन डोर है वो दूसरी जगह है और जो पोस्ट बॉक्स है वो दूसरी जगह है, तो अम्मी never even opens the post box, so we were like, we were totally unaware कि ये क्या है। और एक दिन जो है वो कोई एक सुपरिंटेंडेंट थानेदार मेरे वो लेके आ गया अरेस्ट वारंट, एंड बिकॉज इट वाज हमें कोई हियरिंग के लिए मुझे बुलाया गया था और समथिंग लाइक दैट, तो विच आई नेवर वेंट बिकॉज आई डिडंट नो कि मुझे हियरिंग के लिए बुलाया गया है, एंड बिकॉज आई नेवर वेंट फॉर द हियरिंग इट वाज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अरेस्ट वारंट अरेस्ट आपका होता है, तो वो अरेस्ट वारंट के लिए पहुंच गया था, मैं तो थी नहीं शहर में, एंड आई वाज लाइक व्हाट, लाइक किस चीज के लिए, क्या है, पता ही नहीं अरेस्ट क्यों हो रहा है, क्या है ये, व्हाट इज इट, आई हैड नो क्लू, इवन माय फाइनेंस का जो मेरा हेड है उसको भी नहीं पता था कि ये किस चीज के लिए, तो वो खुद उसने देखा, उसने कहा ये पता नहीं क्या है, लेबर डिपार्टमेंट से आया है, and I was like, and then I called my lawyer, I was like, ये क्या है ये, तो he said कि I think कि like या तो ये है कि किसी ने तुम्हारे बारे में कंप्लेन की है लेबर डिपार्टमेंट में, या तो ये है कि रजिस्ट्रेशन या कोई ऐसी चीज है। जब पता किया तो वो रजिस्ट्रेशन कितने की थी, 2,000 रुपए की, 2,000 के पीछे अरेस्ट वारंट भेजा हुआ था उन्होंने। हमारी सोसाइटी के ये फ्लॉज हैं that we don't have a proper system, definitely, especially when you're running a business, तो ये चीजें फिर being a celebrity ये challenge है एक आपका। बिल्कुल। Nadia, last question, how do you keep yourself motivated? I think that the day to day kind of running जो आपकी होती है, कि जो आपका दिन का जो एक रूटीन होती है, आपका जो पहले से ही मेरे कैलेंडर में होता है कि हाँ यार ये इस दिन करना है, ये इस दिन करना है, जो फ्यूचर के जो मेरे पहले से ही जो प्लान हुआ होता है, वो that is something that just keeps me motivated, like that, because there is something to look forward to. बिल्कुल। नादिया, अब मैं आई हूँ तो रैपिड फायर के बगैर तो जाऊंगी नहीं, बट हमने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इसको, रैपिड फायर के बजाय हमने मॉम्स ऑन फायर कर दिया, थोड़ा मॉमी क्वेश्चंस आएंगे। So are you ready? Yeah, sure. All right. So the first one is, बच्चों में कौन है who is the troublemaker, who always gets into trouble? It's my youngest one, Sherdad, yes. Okay. वो एक चीज which you dislike being a mom. Not hate, but कुछ चीजें होती है ना कि करनी है but you don't like it. Dislike being a mom. At times I don't like the school pickup routine. Same story. Yeah. Okay, वो एक डिश खाने की which you want कि ये मेरे बच्चे बगैर किसी कंप्लेन खा लें चुपचाप. Any kind of sabzi wala खाना. Your one habit that your children hate about you? That I end up screaming a lot. So you are a real mom. Yes.
ऑल राइट, एज अ मॉम अगर आपके पास किसी एक चीज की अनलिमिटेड सप्लाई होती तो वो क्या चीज होती? Unlimited supply, like something physical, or एनीथिंग. unlimited supply of patience, I would I was about to say. say the same thing. One pizza topping that you all agree as a family. Plain cheese. Yeah. One word that comes into your mind when I say the word Shadil. Shadal, docile. Shanze. Shanze she is an introverted extrovert. Yeah. कहानी में ट्विस्ट है. हाँ, वो हमारे सामने नहीं होती, लेकिन वो जब हमारे से दूर होती तो फिर वो बड़ी एक्सट्रोवर्टेड है. Sasha. Sasha, she is feisty. Sherdad. Sherdad is naughty. And Nadia Hussain. Nadia Hussain is very, I'd say, easygoing, fun-loving, energetic. Yeah. और एक मेरी तरफ से very down to earth. Thank you. Thank you so much, Nadia, for being with us on MomKast and being a part of our show. Thank you so much for giving your time. जाते जाते एक message for the women who are just trying their best. You know, they want to achieve their passions and goals, लेकिन you know they don't have that support, and you know it's hard for them. एक छोटा सा message उनके लिए. Well, I'd say that, you know, I mean, there are many women who I have met, and unfortunately, because you know मैं मेकअप की क्लासेस भी देती हूँ, तो बहुत सी ऐसी खवातीन आती हैं मेरे पास जिनको किसी किस्म का सपोर्ट नहीं है, be it from their husbands, be it from their in-laws, you know, and they want to do a lot, but they are very frustrated because उनको कोई उनके पास जरिया नहीं है, कोई अपने इस किस्म की कोई चीज़ आगे बढ़ने का. तो you know, I would just say that there is no point in fighting those people, because you know you're only going to make it worse. difficult for yourself. You know, a lot of times I feel that not that you give up on the situation, but you just need to handle the situation a little more delicately. Maybe वही बात है, एक patience वाली बात है, लेकिन इस चीज को fight करना, you know, like you're creating a bigger problem for yourself and for your family, for your children. It is very unfortunate, no doubt it is very unfortunate, लेकिन ये जो चीज है शायद सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं है, ये चीज बाहर के भी सोसाइटीज में है, लोगों में शायद ये चीज है. And being a married woman with children, and when you want to do a lot more in your life, you definitely need the support of at least your husband, you know. भले in-laws की support हो ना हो, लेकिन husband की support के बगैर नहीं possible. And I think it slowly and gradually ही होगा. Maybe अभी he's not agreeing to it, but you know, Yeah. slow and steady wins the race वाली बात है. And you know, again, वो चीज के ऊपर आपको force करना कि नहीं मुझे इसी field में करना है, वो बड़ा एक थोड़ा सा. You have to be flexible as well. You should be a little flexible. Yes, no doubt कि आप you are very fortunate अगर आपको उस किस्म की चीज मिल जाती है, वो सपोर्ट और वो सारी चीज मिल जाती है कि आप जो करना चाहते हैं उसी में ही आपको वो सपोर्ट मिल जाती है. लेकिन अगर नहीं है तो आप कुछ ना कुछ और करने की कोशिश करो. You know, be a little flexible. I think that I wouldn't say that you know, like compromise is something that only a woman should do, but compromise and flexibility दोनों जो चीज है वो बड़ी intertwined है. तो इस चीज में जो है वो थोड़ा सा जो है वो आपको समझदारी के साथ. Yes. Thank you, Nadia, for being with us today, and thank you for giving us your time. Not at all. Thank you so much. Thank you. जिंदगी की स्ट्रगल्स एक हकीकत हैं, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो. असल बात यह है कि हम अपना मकाम एज अ वुमन रियलाइज करें और अपने गिर्द ऐसे लोगों को रखें, ऐसी नेटवर्किंग करें और ऐसे लोगों से मिंगल अप करें who lift us up, who help us in achieving our passions and our dreams. क्योंकि मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची हों, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं. With that thought, I'll take a leave. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. I hope आपको हमारी आज की एपिसोड पसंद आई हो. Take care.
अल्लाह हाफिज़।